यस सर। हाँ तो बस चलो लिखना शुरू कीजिएगा। लास्ट क्लास में तो पूरा डायग्राम पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ समझ चुके थे, आज सिर्फ लिखेंगे इसको और लिखने के बाद अगर टाइम बचा, क्योंकि ये जूम है यानी 40 मिनट्स के बाद सेशन एंड हो जाएगा, तो विल बी बिगिनिंग विथ अनदर सेशन। अगर टाइम 10 मिनट से अधिक रहा तो 10 मिनट से कम रहा तो हम लोग उतने पे छोड़ देंगे। चलिए तो लिखते हैं। whenever a suitable pollen whenever a suitable pollen lands on the stigma, whenever a suitable pollen lands on the stigma, it germinates to form it germinates to form it germinates to form pollen tube. It germinates to form pollen tube. It germinates to form pollen tube. The pollen tube contains the pollen tube contains the pollen tube contains two generative cell. The pollen tube contains two generative cell and the pollen tube contains two generative cell and one vegetative cell. The pollen tube contains two generative cell and one vegetative cell. Next point. When this vegetative cell actually when this vegetative cell actually reaches the ovary, it degenerates. When this vegetative cell actually reaches the ovary, it degenerates. It degenerates. हो गया? यस सर। अगला पॉइंट लिखिएगा। On the contrary, the female gametophyte is seven-celled and eight-nucleated. Sir, female gametophyte. The female gametophyte is seven-celled and eight-nucleated. एट सर। Seven-celled and eight-nucleated.
7-celled and 8 nucleated. In this 3 cells are there on the top. In this 3 cells are there on the top called, सबसे ऊपर में जो 3 सेल था क्या नाम था उसका? Antipoded. Very good. 3 cells are there at the top called antipodals. 3 cells are there on the top called antipodals, which are vegetative cell. कल बता चुका हूं वेजिटेटिव सेल का मतलब क्या. Which are vegetative cell. सर वेजिटेटिव सेल एक बार और बताइए ना. वेजिटेटिव सेल वैसे सेल को बोलते हैं जिसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता. ठीक है. हो गया. यस सर. Yes, sir. Which are vegetative cells. ब्रैकेट में तो लिख ही लो. Which has no role in reproduction. Which has no role in reproduction. हो गया. Yes, sir. Next. Next point देखो. In the middle there are two polar nuclei. In the middle there are two polar nuclei. In the middle there are two polar nuclei. In the middle there are two polar nuclei which in the middle there are two polar nuclei which do not have cell wall. Which do not have cell wall. Which do not have cell wall. हो गया. Yes, sir. Yes. Next point. At the bottom there are 3 cells. At the bottom there are 3 cells. At the bottom there are 3 cells which in which the middle one is that of egg. In which the middle one is that of egg. In which the middle one is that of
in which the middle one is that of egg, and the two others सर मिडल वन इज डेट ऑफ के बाद क्या बोले? that of egg, जो बीच में होता है नीचे में वो egg है, and the two others are that of, नीचे में और दो क्या होता है बताओ? Synergids. Very good. And the two others are that of synergid. Synergids are again vegetative cells. सर क्या बोले? सिनर्जीज आर अगेन? Synergids are again vegetative cells. Synergids are again that of vegetative cells. ठीक है, अगला पॉइंट देखो. Once the pollen tube approaches the ovary, once the pollen tube approaches the ovary, once the pollen tube reaches the ovary, it releases its generative cell. It releases its generative cell. It releases its generative cell in any one of the two synergid. It releases its generative cell in any one of the two synergids. In any one of the two synergids. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Look here, at the same time, the two synergids, sorry, at the same time the other synergid degenerates and the two polar nuclei fuses, Sir, two polar. the two polar nuclei fuses to form diploid. हो गया? हो गया? The two polar nuclei Yes, sir. fuse to form diploid.
next point लिखिएगा. Now one of the generative cell fuses with the egg to form zygote. Sir, repeat again. The two नहीं बोलते, क्या बोले थे? One generative cell fuses with the egg. The one of the two, ऐसा बोले थे. The one of the two generative cell fuses with the egg and forms zygote. The one of the two generative cell fuses with the egg and forms zygote. Full stop देकर continue करना. This is true fertilization. सर और ये बोलो. सर ये लाइन फिर से रिपीट कीजिए ना. नाउ वन दी. The one of the two. Now one of the two generative cell fuses with the egg to form zygote. This is true fertilization. This is true fertilization. और इसी का एक और नाम है syngamy. This is true fertilization or syngamy. हो गया. Yes, sir. यस सर. वेरी गुड. तो दिस इज ट्रू फर्टिलाइजेशन और syngamy. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा या इसी में कंटिन्यू कीजिए ना. एक और पॉइंट है, फुल स्टॉप देकर कंटिन्यू कीजिए. It will lead to formation of seed. It will lead to formation of seed. It will lead to formation of seed. हो गया. Yes, sir. आगे लिखिएगा. So next point. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. The other generative cell fuses with the diploid polar nuclei. देखो डिप्लॉइड हो गया था पोलर न्यूक्लियस, उससे फ्यूज करता है. The other generative cell fuses with the diploid polar nuclei Diploid. polar nuclei diploid polar nuclei to form a triploid tissue triploid tissue triploid to form a triploid tissue to form a triploid tissue to form a triploid tissue
to form a triploid tissue called endosperm. To form a triploid tissue called endosperm. To form a triploid tissue called endosperm. ठीक है, तो एंडोस्पर्म बनाता है. फुल स्टॉप देकर कंटिन्यू करना इसी में. Here the endosperm is formed by here. क्या बोले थे, वापस बोलना एक बार. Endosperm is formed by Here endosperm is formed by fusion of 3 haploid cells. Fusion of 3 haploid cells. that is formed by Fusion of 3 haploid cells. 3 haploid cells. एंड चूंकि यहाँ 3 हैप्लॉइड सेल्स होता है, इसीलिए 3 हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से बना हुआ सेल हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. 3 हैप्लॉइड सेल्स एंड hence fusion of 3 nucleus occurs. 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 That is why this is also known as triple fusion. That is why it is also known as triple fusion. That is why it is also known as triple fusion. इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं. कोई दिक्कत तो बताइए. कोई दिक्कत? no sir. No, sir. वेरी गुड. तो ये ट्रिपल फ्यूजन भी हो गया. अब अगला पॉइंट लिखिएगा. Hence in one pollination, hence in one pollination, there is fusion of two male gametes ब्रैकेट में one with egg and one with diploid polar nuclei. One with egg and one with diploid polar nuclei. One with egg and one with diploid polar nuclei. One with diploid polar nuclei. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया. तो 2 बार ये होता है. एक बार डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई बनते वक्त और एक बार फ्यूजन होता है. मतलब एक बार डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक बार एक के साथ. अगला पॉइंट लिखिएगा. So 2 fertilizations are taking place. Fertilization of
So there are two fertilization taking place. हो गया? So there are two fertilization taking place. That is why this type of fertilization is also called this type of fertilization is also called double fertilization. This type of fertilization is also called double fertilization. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आई थिंक ये अब आपका ये टॉपिक खत्म हुआ. अच्छा नहीं, अभी एक सीड थोड़ा सा बचा है. अगला हेडिंग डालिए, सीड. क्या सर? सीड. Sir, herring or sub herring? हेडिंग. Okay. जैसे डबल फर्टिलाइजेशन ये सब दिए तो उसी तरह बगला होगा सीड. अच्छा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लांट में क्या क्या चेंज आता है इस बारे में आप लोग कुछ बताइए जरा. सीड के बगल में अच्छा लगेगा अगर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए चेंजेस इन फ्लावर. सीड के बगल में ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा. चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. हो गया? चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. Yes, sir. Changes in flower after fertilization. Changes in flower after fertilization. लिखिए इसमें after fertilization zygote divides several times. After fertilization the zygote divides several times. The zygote divides several times. Zygote divides several times to form embryo. Zygote divides several times to form embryo. Within the ovule, खास बात ध्यान रखिएगा, ये सब ओव्यूल के अंदर होता है. Within the ovule. हो गया? Yes, sir. Next Yes, point. sir. The ovule develops a tough coat. Ovule develops a tough coat. The ovule develops a tough coat and then itself is converted into seed. And then itself is converted into seed. Sir, repeat कर दीजिएगा. The ovule then develops a tough coat and then itself is converted into seed.
ओव्यूल पे पहले एक टफ कोट बनता है, उसके बाद ओव्यूल खुद ही एक सीड में कन्वर्ट हो जाता, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता, एंड आफ्टर दिस the tough coat is known as seed coat. After this, the tough coat is known as seed coat. हो गया? Next point. The ovary क्या is known as is known as seed coat. Seed coat. अगला पॉइंट लिखिएगा. The ovary is converted into fruit. ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा. ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. अच्छा, आप में से कोई ऐसा भी है जो लिंक से ज्वाइन होता है, वाइज से ज्वाइन नहीं होता? कोई बच्चा जो वाइज पे रजिस्टर्ड नहीं है? सर हम लिंक से होते हैं। सर हम लिंक से होते हैं। वाइज पे हो नहीं हो ये बताओ. नहीं है सर। नो सर नहीं हम हो भी तो हम लिंक भेजे हुए वाइज पे रजिस्ट्रेशन के लिए, वाइज पे रजिस्टर कीजिए. लिंक हम आज आखिरी बार भेजे हैं. आप लोग को वाइज से ही आना है, ठीक है? और अब भी तुरंत आप रजिस्टर करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे मत जस्ट कीजिए एक सर। मिनट लिंक में भेज दिया सेशन कीजिए। खत्म होगा. 1 मिनट में सेशन खत्म होगा और उसके बाद फिर लिंक नहीं जाएगा. आपको वाइज से ही आना है. तो आपके पास है, आप हम अभी रुक जा रहे हैं, अभी हम आगे नहीं लिखवा रहे हैं, अगले सेशन में लिखवाएंगे. 1 मिनट बचा है, फटाफट से वाइज पे रजिस्टर कीजिए जो भी लोग नहीं है.